गुड मॉर्निंग बच्चों। रिसेंटली सीबीएसई अकाउंटेंसी का कुछ सिलेबस डिलीट किए हैं, उनके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर देन प्रॉब्लम में जाएंगे। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वे आर डिलीटेड इन अकाउंटेंसी? सो अकाउंटेंसी देयर आर टू पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ not for profit organization, partnership and companies. पार्ट ए में ये 3 यूनिट्स हैं हम लोग के पास। फर्स्ट यूनिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड यूनिट पार्टनरशिप, थर्ड कंपनीज। और सेकेंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस of financial statement and then cash flow statement. So we have 2 parts. Part A consists of 3 units, not for profit organization, second unit partnership, and third unit is accounting for companies, right? And second part consists of 2 units, analysis of financial statement and cash flow statement. इसमें कौन सा पार्ट में डिलीट किए हैं? सीबीएसई इज डिलीटेड विच पार्ट? सो दे डजंट टच द सेकेंड पार्ट बी में कुछ पोर्शन डिलीट नहीं हुआ, सो एज इट इज पार्ट बी रहेगा। सो डिलीशन किस में हुआ? ओनली पार्टनरशिप और कंपनीज में हुआ। सो यूनिट टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ टॉपिक्स डिलीट किया गया है बच्चों। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट डिलीट हो चुका है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपरेशन डिलीट हो चुका है। सो वी नीड नॉट to adjust capital account or we need now to prepare balance sheet in admission. So admission में इतना ही portion delete हो चुका है। This is for admission. Then retirement के लिए, retirement में भी adjustment of capital account हटा दिया गया है। उसका अलावा loan account भी delete हो चुका है। So we need now to adjust the capital account of partners in retirement and we need now to prepare loan account, right? And as part of death of the partner में deceased partner capital account करने का जरूरत नहीं है। Deceased partners capital account, executor account प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सो वी नीड नाउ टू प्रिपेयर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देयर एग्जीक्यूटिव अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस आर द पोर्शन डिलीटेड इन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। सो वंस अगेन रिपीट इट, इन एडमिशन वी नीड नाउ टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वी नीड नाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। इन रिटायरमेंट वी नीड नाउ टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, वी नीड नाउ टू प्रिपेयर लोन अकाउंट। And the death, we need now to prepare deceased partners capital account and we need now to prepare executor account. The remaining portion of the syllabus will be there. So इतना ही portion delete हुआ है, बाकी normal जो problem जो हम लोग करना है वो हम लोग we have to follow that one. So this next topic जो है accounting for companies. So this is the third unit, उसमें भी कुछ portion delete हो चुका है। accounting for companies. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, में मेथड्स ऑफ रिडम्पशन डिलीट हो चुका है। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, सो देयर आर 2 मेथड, लमसम मेथड and draw of lot method. So these 2 methods were deleted. अब ये मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। So once again repeat it.
the related syllabus is accounting for partnership firm में admission of partner में adjustment of capital account and preparation of balance sheet. Retirement of a partner में adjustment of capital account and loan account is deleted. And deceased partners में preparation of capital account of deceased partner and executor account we need to prepare, right? Accounting for companies में redemption of debenture under methods of redemption. इसमें दो मेथड्स है, lump sum method and drop lot method. वो दोनों सिलेबस में नहीं है. सो रिमेनिंग चैप्टर में रिमेनिंग जो पोर्शन सिलेबस में है वो एज इट इज रहेगा फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस. ओके बच्चे, सो आज हम चैप्टर 1 में जाएंगे, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो स्टार्ट. अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सो accounting for not for profit organizations, right? What is not for profit organizations? Let me explain. In addition to trading organization, there are also certain organizations which do not trade but render services to its members and to the society without objective of making profit. Such type of institutions or organizations are not for profit organizations. जो organization का मकसद profit कमाना नहीं है, जो organization सेवा देता है अपने members को और public को, उसको बोलते हैं not for profit organizations. बच्चे, अपना घर का बगल में ऐसा institution देखें कहीं पर आप वाकिफ हुए? You may notice, you may have some clubs. आपका अगल बगल में हॉस्पिटल्स होगा, लाइब्रेरीज होगा. उन लोगों का मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, सेवा देना है. एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सेवा देता है और प्रॉफिट कमाता नहीं है? कुड यू एबल टू एक्सप्लेन, कुड यू एबल टू नेम देम? यस, व्हाट मे बी क्लब. क्या क्लब हो सकता है? स्पोर्ट्स क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, अदर क्लब्स? नो, क्लब्स सारा क्लब्स एनपीओ है. देन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स है सारा हॉस्पिटल्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा. देन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी हो जाएगा. देन स्कूल्स, देन एनजीओस, देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. व्हाट आर दे? टेम्पल, मॉस्क, चर्च, ये सब एनपीओ में आ जाएंगे. देन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, एनजीओस, सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इनका मकसद क्या है? इनका मकसद टू प्रोवाइड सर्विस टू पब्लिक एज वेल एज टू देयर मेंबर्स. So they provide services to their members and to the public. Their main aim is to not earn profit. Profit इनका मकसद नहीं है. Their main aim is to not to earn profit, right? So आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर विदाउट प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर सकता है? क्यों प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, यू नो. विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस कांट सर्वाइव, यू नो. सो विदाउट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होगा? पैसा कहाँ से आएगा? what are the source of income for that particular organizations? So ऐसा ही क्वेश्चन है, पैसा कहाँ से आएगा? So एनपीओ को स्टार्ट करने के लिए some members जुड़ेंगे. They are called subscribers. They may called as members. Okay, every members they have to pay subscription. It may be monthly or annually. जो क्लब स्टार्ट किया, क्लब मान लीजिए 100 मेंबर्स मिलकर स्टार्ट किए, 100 मेंबर्स जॉइन टुगेदर एंड स्टार्ट अ क्लब. ठीक है? सो द मेंबर्स हैज टू पे सम monthly amount of rupees 500 per month or 6,000 per annum, like that. They have to pay every month or every year. So that amount is called subscription. That is membership subscription. Membership subscription.
राइट. दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ. एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है. सेकेंड क्या हो सकता है? डोनेशन मिल सकता है. डोनेशन फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम एनी कॉर्पोरेट. देन गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट का ग्रांट्स कुछ मिल सकता है. सो दीज आर दी मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ. व्हाट इज एनपीओ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम 3 है. व्हाट आर दे? मेंबरशिप देने वाला पैसा, दैट इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. देन डोनेशंस कलेक्टेड थ्रू पब्लिक और कॉर्पोरेट. देन गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट भी आपको मोटिवेट करने के लिए तो एस्टैब्लिश होने के लिए ग्रांट दे सकते हैं. सो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ. और कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं. सो उस द्वारा जो इनकम आएगा वो इनकम को भी दोबारा for the betterment of society, for the betterment of members, the income may be used for the NPO in the club. So हम लोग क्या पढ़े आज? NPO क्या होता है, उनका मकसद क्या है? NPO is the not for profit organizations which is established to provide services to the members as well as to the public. The examples are, what are they? Clubs, hospitals, political associations, temple, mosque, church, gurdwaras, all are what? NPOs, not for profit organizations, right? So what are the main source of income? The main source of income was membership subscription, donation, government grant, and the small amount of profit they may earn through trading activities. So these are the main source of income, right? Next, so when there is a profit, there we prepare profit loss account. जहाँ पर profit है वहाँ पर profit and loss account prepare करते थे हम लोग. यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, सो अकाउंट तो करना पड़ेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मनी. कहाँ पर पैसा है वहाँ पर देयर इज अ नीड ऑफ अकाउंट. सो क्या अकाउंट ओपन करेंगे? हियर इट्स लीगल. एवरी एनपीओ, एवरी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स. सो विच अकाउंट हैज टू बी ओपन? पीएल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हम लोग बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट. So which account has to open? We have to open a different account. That account is called income and expenditure account. What is that? Income and expenditure account. And one more account we have to prepare, receipt and payment account. Receipts and payment account. Instead of profit and loss account, we have to prepare income and expenditure account. And instead of cash account, we have to open receipts and payment account. And lastly, we have to prepare balance sheet to know the financial position of the NPO. So we have to prepare 3 things here. What are they? We have to prepare. What are the things we have to prepare here? We have to prepare income and expenditure account. And secondly, we have to prepare receipts and payments account. And thirdly, balance sheet is prepared in order to show the financial position of the organizations. Right? So let's learn one by one. Right? Let's start with features of NPO. NPO का क्या क्या features है? What are the features of NPO? Features. जैसे हम लोग जो पढ़े इसको हम लोग उसको रिवाइंड करेंगे फीचर्स में. So could you able to tell what may the first features of NPO? The main focus of NPO is to provide service. First one is service. Right? So they are formed to provide services to the specific group of members and to public. ठीक है? The main aim of this organization is to provide services either free of cost or nominal rate and not to earn profit. Right? This is the first features of NPO. Second feature is form. What is that? Form. How it is formed? It is formed through charitable trust. Charitable trust or society.
सोसाइटी का रूप में फॉर्म होगा या चैरिटेबल ट्रस्ट का रूप में फॉर्म होगा। आप कभी भी जो प्राइवेट स्कूल्स देखेंगे आप ट्रस्ट का रूप में स्टार्ट किया होगा, क्लब जो है सोसाइटी या ट्रस्ट का रूप में स्टार्ट किया होगा। अमृता हॉस्पिटल यहाँ पर है, वो भी ट्रस्ट है, isn't it? So they are formed or set up as a charitable trust or society, and the subscriber of this organizations are called members. Those who are subscribed, they are called members. जो ट्रस्ट को स्टार्ट करते हैं उनको, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेंबर्स। दे हैव टू पे एनुअल और मंथली सब्सक्रिप्शन, राइट। तो सेकंड फीचर्स है सेपरेट एंटिटी। थर्ड क्या है? सेपरेट एंटिटी। मतलब व्हाट इज सेपरेट एंटिटी? हियर the organization is different and distinct from their members. Even though member starts the NPO, member starts the club को start members किए, लेकिन members और club अलग अलग है। कानून के नजरों में member is separate and club is separate. The desist of the insolvency of any member will not affect the workings of the club. कोई मेंबर्स, जो मेंबर स्टार्ट किया क्लब को, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उनका डेथ हो गया, उसका डेथ की वजह से क्लब का कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेंबर इज सेपरेट एंड एनपीओ इज सेपरेट, द क्लब इज सेपरेट, राइट। तो सेपरेट एंटिटी। फोर्थ वन इज इट इज कंट्रोल्ड बाय, मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। मान लीजिए एक क्लब्स है, आप लोग 100 मेंबर्स मिलकर क्लब बनाए, वो क्लब को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाना पड़ेगा, मैनेजिंग कमेटी बनाना पड़ेगा। उसमें प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ट्रेजरर होगा, लाइक सेक्रेटरी होगा। सो मैनेजिंग कमेटी विल बी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। इलेक्शन होगा, वोटिंग प्रोसीजर होगा, कॉन्टेस्ट करेंगे, उसमें एमडी या चेयरमैन या प्रेसिडेंट वगैरह सेलेक्ट करेंगे। जो सेलेक्टेड मेंबर्स है, उन लोग की इलेक्टेड मेंबर्स है, उन लोग ही दे हैव टू मैनेज द क्लब्स एंड एनपीओस। लास्ट वन, फिफ्थ वन इज अकाउंट। What are the account they have to maintain? They have to maintain income and expenditure account and receipt and payments account. It is compulsory for the NPO. They have to prepare, they have to maintain proper books of account. Right? So these are all the features of NPO. What are the features? The first feature is they have to provide services. Second feature is they are formed through charitable trust or society. Then third is separate entity. Even though members started the club or NPO, they are treated as a separate entity distinct from its members. And fourth one is managed by elected members. So managed by managing committee elected by its members. Then accounts they have to maintain properly, and they have to maintain two accounts here. Income and expenditure account they have to prepare, and another one is they have to prepare receipt and payments account. Clear? Okay, next move to the next one. What is receipt and payments account? Let me learn the meaning of receipt and payments account, right? Receipts and payments account is a summary of cash book. अब दरबार में पढ़ चुके होंगे, कैश बुक वगैरह पढ़े हम लोग, कैश बुक टू कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हैं। सो रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज समरी ऑफ कैश बुक का ये समरी है, right? Receipt payments account is a summary of cash transactions for a particular period. It records all the cash receipts and payments irrespective of fact whether they are capital or revenue items, or whether they relate to current year or previous year. The account starts with the opening balance and similarly closes with closing balance. जो receipt and payments account है, ये कैश बुक का summary है, ये रियल अकाउंट होता है। This is a real account. Okay. It records all the balances. This is receipt and payments account. Receipt, payment. It records all the receipt, whether revenue or capital. Capital receipt को भी record करेगा, then revenue receipt को भी record करेगा. Then capital payment को भी record करेगा, then revenue payment को भी record करेगा.
right? It records all the balances. पैसा मिलना जरूरी है. Just it doesn't distinguish whether it is revenue or capital. पैसा आने से record कर लेगा. Then it doesn't it record all the year balances, whether the current year, previous year, next year. जो पैसा, the amount belongs to previous year or next year is irrespective of the year. It records all the year amounts or balances in the account. So it doesn't filter the amount. The main thing is the amount must be received. So मतलब क्या है? Receipt payments account records all the items irrespective of nature of items, irrespective of years, right? So these are the main focus of receipt and payments account. Let's learn the features of receipt and payments account. So features अभी जो मैं डिस्कस किए थे उसी को features में derive करिए, easy हो जाएगा. Without any difficulty, you can easily sell features. What are the features? Receipt payments account is the real account. This is the first feature. Receipt payments account is a real account. Real account का rule क्या है आपको पता है? Debit what comes in, credit what goes out. Right? So real account. This is receipt payments account. Debit, credit, receipt and payments account. This is receipts. This is payment. जो enter the debit what comes in means जब receive करेंगे we have to debit, जब payment करेंगे we have to credit. Means cash received will be debited, cash payment will be credited. Right? Second, it starts with opening balance and ends with closing balance. It starts with opening balance and ends with closing balance. इनका opening balance यहाँ पर होगा, to balance brought down, by balance carried down यहाँ पर होगा. It starts with opening balance and ends with closing balance. The nature of items. All cash payments and cash receipts irrespective of fact whether capital or revenue natures will be recorded. All the items irrespective of nature it will be recorded. Capital nature भी record करेगा and then revenue nature भी record कर लेगा. So the next features. The next feature is it will not record non-cash transaction. Non-cash transaction को record नहीं करेगा. So receipt payments account का nature क्या है? Real account है और इसका opening balance होगा और closing balance होगा. It records revenue nature as well as capital nature and it doesn't record non-cash transactions. Right? Let's learn the other account, that is income and expenditure account. Just we learn what account? Receipt payments account. Next we are going to learn which account? Income and expenditure account. Income and expenditure account. Income and expenditure account is similar to profit and loss account of a profit-seeking entity. And it is prepared to ascertain whether the current incomes are in excess of current expenditure or vice versa. So it is similar to profit and loss account. Okay, to check whether income is more or expenditure is more. To check whether club is earning more income or expenditure. So it is a nominal account. It is a nominal account. Okay, it records only revenue items. It records only revenue items. Right? It records only current year balances. Current year balances. Right? It doesn't have any opening or closing balance. It does not have opening and closing balance. It follows accrual basis.
income and expenditure account is just like a profit and loss account. It is a nominal account where we record the expenses and losses in the debit side, where we record incomes and gains in the credit side, and it records only revenue items. Revenue item means क्या है? जो item recurring nature है, जो बार बार होने वाला item है. सैलरी देना बार बार देना पड़ेगा, हम लोग वेजेस देना पड़ेगा, स्टेशनरीज, पोस्टेज, जो दोज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग नेचर, रूटीन नेचर, उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर. तो उसको ही यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा. Then it records only current year balances. What is current year balances? We have to record only the running year balances. We have to delete the previous year, next year balances with the recent payments account. Then it does not have any opening and closing balances. इसका opening balance, closing balance नहीं होगा, क्योंकि जो मिलेगा सरप्लस और डेफिसिट, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम में मिलेगा, इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा. देन इट फॉलोज अक्रूवल बेसिस. व्हाट इज अक्रूवल बेसिस? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी कंसीडर्ड. Right? So recent payments account follows cash basis and income and expenditure account follows accrual basis. So these are the things we learned today. So in the next class we are going to distinguish the income and expenditure account and receipt and payments accounts. So these are all the theory parts. So account part में क्या होगा? Receipt and payments account will be the question. We have to convert the receipt and payments account into income and expenditure account and balance sheet. वही हम लोग प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में. So till then, thank you, bye.